So, hi guys, is the board is visible? Is the board is visible, guys? And am I audible? Yes. Good evening to all of you. Yes. Okay, Lohit, Nasir. Just wait. I will start the class. Just wait for a few minutes. Okay. I will start the class with. Yes, 10 students have joined. Yes, Nasir, I am fine. And what about you? So, just wait. I will start the class. Just wait for a few seconds. Okay. Maybe more students will join. Lohit. यस काइंडली अपना अपना थोड़ा नाम लिखो यहाँ में एक बार अपना खुद का नाम लिखो नसीर ओके लिखो अपना अपना तो एक बार नाम लिखो इसमें चार्ट में तो हम देख लेंगे कौन कौन ज्वाइन किया है ठीक है यस Lohit here. Nasir Hussain is here. Yes, Nasir. There are 7 students have joined. Just 7. Only 7 students have joined. Okay. So just wait. Few more students will join within. Okay. We'll start from 8:15. Okay. From 8:15 I will start the class. Okay. Just wait for 2 or 3 minutes. Maybe more students will join. Okay. Yes, board is blur. I hope board is visible. Okay. I will adjust. Okay. सादीप तुम वीडियो का क्वालिटी थोड़ा इंक्रीज करो अपना मोबाइल से मे बी बोर्ड विल बी विजिबल यस वीडियो का जो क्वालिटी है उसको थोड़ा सा इंक्रीज करो जैसा 480 उसमें जाओ हाँ थोड़ा सा क्वालिटी को चेंज करो 360 480 यस 360 और 480 में जाओ इट विल बी विजिबल यस
Just wait, both will be visible. Just wait. Lohit is here, Sadif here. Okay. Joy. Where is Saurav? Ah, yes. Where is Saurav? Saurav is here. सौरभ ने शायद ज्वाइन नहीं किया होगा अभी तक. सौरभ ने ज्वाइन नहीं किया है. अरे यस देवाशीष जॉय नहीं किया सर. पक्का खाना तो दूसरा है. यस जॉय. सौरभ तो शायद खाना खा रहा होगा. यस. yes. 12 students have joined. Yes. So within 2 minutes I will start the class. देवाशीष. Yes, देवाशीष ग्रुप में एक बार मैसेज करो and ask them to join immediately. Polash Dash. Yes, Polash Dash also is here. Please send a message to your group, maybe yes, and ask them to join immediately. रानी. हाँ डिनर का टाइम है ना तो वो भूल गया क्लास. यस यस वो भूल गया होगा सौरभ ने. हमको लाइव क्लास में भी डिनर का कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा ना. लाइव क्लास में भी डिनर का कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा. शायद लाइव में कुछ लोग ऐसा डिनर खाने के लिए भी आएगा. यस. रात में और भी हैंडसम देख रहा हूँ. अरे सच में जॉय. अरे थैंक यू. हैंडसम देख रहा है ना. अच्छा थैंक यू. So okay guys, so let's start the class. So guys, here since this is just a quick revision class, so here just I will discuss some important portion. Okay, just I will do some quick revision which we have discussed already in your class. Okay. Yes. अरे वो दे देगा. हाँ टेंशन मत लो, उसको हम दे देगा. तो देखो so today we'll just discuss about the relation and function. So since already you know that there are 3 or 4 types of important relations are there. Yes. So you see here just we will discuss about the types of relation. Yes. So there will be some important types of relations are there. Yes, that relation we will discuss. So first types of relation is here a reflexive relation. Yes, reflexive relation. Here also you see one thing here guys, already we have discussed in the last class. जो जब भी हम लोग रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हम लोग डिस्कस करते हैं, देन द रिलेशन विल बी ऑन ए सेट. यस, कोई भी एक पर्टिकुलर सेट में होगा. दैट जैसे प्रीवियस में हम लोग आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी लिया था. यस,
But in this case, whenever we'll discuss about the reflexive, symmetric and transitive, in that case we'll discuss about the relation on a set R. On a set, yes, A to A. That means both the set will be same set. Yes, you remember one thing. This thing you have to remember. So if we discuss about the reflexivity or symmetricity, transitivity or equivalence relation, in this case we consider both the same set are same. And in this case we also say like this one, R is a relation on A. Yes, R is a relation on A. हम लोग ऐसा करके लिख देते हैं, ठीक है. R is a relation on A. Okay, so guys, you see, suppose we consider R is a relation on a set A here. Yes, R is a relation on a set A. Then this R is called reflexive. When this relation R is called reflexive here, you see, if A comma A belongs to R, for all small a belongs to A. That means, suppose we consider here, just I will take an example here first. Suppose A is a set and here some element, suppose A on A2, A3, and here also A on A2, A3 and so on. Yes, suppose R is a relation on this set capital A, then this relation is called reflexive, guys. Yes, if this relation is called reflexive if all the elements of this capital A are related to itself. That means ये A1 है ना, A1 A1 का साथ होना चाहिए, A2 A2 का साथ होना चाहिए, A3 A3 का साथ होना चाहिए. Yes, then we call this relation is reflexive. So हम लोग इसमें डेफिनेशन कैसे दिया है, A कुमा A belongs to R में रहेगा. That means कोई भी A किसका साथ रिलेट होगा, A का साथ रिलेट होगा, खुद का साथ रिलेट होगा, ठीक है. For all A small a belongs to capital A. That means A capital A में जितना element है ना, so पूरा का पूरा element will relate with itself. Yes, then only we call the relation is reflexive. Yes, guys. Then the relation is called reflexive. Yes. So suppose we consider an example of a relation here. Yes, you see how we can. Suppose if we consider a relation, suppose here L is nothing, set of all state line. Yes, state line, set of all state line in a plane. And suppose we consider a relation R like this way, ठीक है. इसमें क्या है, L1, L2 है, such that this L1 is parallel to L2. Yes, and where this L1 L2 belongs to capital L. Yes, now you see this relation will be reflexive. Why? Because you see, guys, here we consider a relation R. So a relation R, one is set capital A, and where L is क्या है, one is set capital L, and where L क्या है, set of all the lines. That means suppose we consider this is our L, this is our L, so इसमें क्या रहेगा, L1, L2, L3, L4 इस टाइप का, L1, L2, L3, L4 बहुत सारा स्टेट लाइन रहेगा. Now you see the definition of our relation. This L1 line will related to L2. This L1 line will be related to L2 only where they are parallel. ठीक है, L1 line L2 का साथ parallel होने से क्या करेगा, L1 L2 का साथ relate होगा. So now you see, suppose a line, suppose we consider this is L1 line. Then obviously this line will be parallel to itself. ये लाइन जो होगा ये खुद का साथ पैरेलल होगा. यस गाइस, सो एक लाइन L1 कोई भी ले लिया एंड दैट इज पैरेलल टू इटसेल्फ. दैट मीन्स ये लाइन क्या होगा, दिस L1 विल रिलेट टू L1. Yes, this L1 line will be related to L1. Similarly, for case L2 line, suppose we consider this is our L2 line. Again, you see this L2 line also will be parallel to itself. That means this L2 line also will relate to L2. Similarly, in case of L3, L4, L5, जितना line है इसमें, जितना line से
all are parallel to itself, that means all the lines will be related to itself. Yes, okay guys, that means इसमें जितना लाइन से पूरा का पूरा क्या होगा, खुद का साथ रिलेट करेगा. इज इट ओके गाइस? सो देखो पूरा का पूरा लाइन क्या होता है, खुद का साथ रिलेट होता है. दैट मीन्स दिस रिलेशन इज नथिंग, दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन. इज इट ओके? ओके, सो आई होप नाउ दिस इज clear. Okay, so now come to another types of relation, and which is called symmetric relation. Yes, symmetric relation. So you see here the symmetric relation. Suppose we consider a set capital A here. Yes, A set capital A, and R is a relation from one the set A, and this set suppose contain A on A to A3. Here also A on A to A3. These three elements are constant. Okay. Now this relation R is said to be symmetric. If what happen? If suppose A on is related to L2. If this is happened, if A on is related to A2, then this A2 A1 का साथ relate होना चाहिए. Yes, if this is happened, if this A on relate to A2, then if this implies A2 is also relate A on, then we call this relation is symmetric. Yes, that means this type करके. Suppose A भी दो, sorry, A on and A2 two elements है. Suppose if this A on is related to E2, if this is happened, देन क्या होना चाहिए, A2 भी A1 का साथ होना चाहिए. यस, जब A1 A2 का साथ होगा, देन A2 भी किसका साथ होना चाहिए, A1 का साथ होना चाहिए. इफ दिस इज सेटिस्फाई और इफ दिस इज हैपेंड फॉर दिस रिलेशन R, देन R इज कॉल्ड सिमेट्रिक. यस, तो देखो डेफिनेशन किस टाइप के दिया है. इफ A1 इज रिलेटेड टू A2, दैट मीन्स इफ A1 A2 बिलोंग्स टू R implies yes A2 also relate to A1, or A2 A1 belongs to R. For all A1 A2 belongs to R. A1 A2 कोई भी elements के लिए if this is happened or if this is satisfied, then R is called symmetric. Okay guys, okay, so देखो तुम लोग ग्रुप में एक बार मैसेज करो, तो ग्रुप में मैसेज करो और सबको ज्वाइन करने के लिए बोलो. हाँ, बहुत कम स्टूडेंट ज्वाइन किया है. सौरभ, सौरभ ज्वाइन किया है क्या? सौरभ ने ज्वाइन किया है? सौरभ इज हियर. अभिलाष, ओके. सो देखो एक सिमेट्रिक के लिए भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. ठीक है, सिमिलर रिलेशन विल कंसीडर हियर. सपोज L इज नथिंग, दिस इज सेट ऑफ all state line. Yes, all state lines, and we construct a relation R like this way. Yes, this R will contain L1, L2. That means this L1 line will related to L2 such that when L1 is perpendicular to L2, and where L1 L2 belongs to capital L. Bas. This is our relation. Now we need to show whether we need to check whether this relation R is a symmetric or not. Yes, you see, is this relation is symmetric? Yes, you see here. According to our this definition of relation, ये L1 line, suppose मान लो एक L1 line है, this L1 line will be related to L2 if L1 is perpendicular to L2. Yes, if L1 is perpendicular to L2, then these two lines will be related according to this relation. Yes, you see the definition of relation.
L1 लाइन L2 का साथ रिलेट होगा जब क्या होगा L1 and L2 परपेंडिकुलर होगा. So now you see, suppose L1 is related to L2, that means L1 is perpendicular to L2. Then obviously क्या होगा, देखो L2 भी L1 का साथ परपेंडिकुलर होगा. Yes, that means कोई भी एक लाइन जब L1 L2 का साथ परपेंडिकुलर होता है, यहाँ से हम लोगों को L2 L1 का साथ परपेंडिकुलर मिल जाएगा. That means if this is happened, or if we consider L1 is perpendicular to L2, then this will imply this L2 also is perpendicular to L1. Yes, that means जब L1 L2 का साथ रिलेट करेगा तो L2 भी L1 का साथ क्या करेगा, कनेक्शन होगा. L1 L2 का साथ भी कनेक्शन होगा. ठीक है, that means this relation is nothing, this is a symmetric relation. यस गाइस. तो एंड देन देखो ट्रांजिटिव रिलेशन है. देखो हम और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर देगा. हाँ, डोंट वरी, जस्ट इसमें देखो कुछ कोई रिवीजन हम दे रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं. ठीक है, उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेकर आए हैं, नीचे होगा. ठीक है, ये देखो एक क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करना है. तो इस टाइप का देयर आर मेनी क्वेश्चन आर देयर. ठीक है, सो जस्ट वेट, और इसको थोड़ा अच्छा से तुम लोग नोट करो. ठीक है, पूरा अच्छा से इसको नोट करो. So now come to transitivity. So transitivity क्या है, देखो just I will take an example first. Suppose A is a set. Yes, A is a set and this set consists suppose these three elements. Suppose A1, A2, A3, and here also A1, A2, A3. And we consider R is a relation from A to A, or R is a relation on A. Then this relation is called transitive. Yes, if this is happened, if suppose A1 किसका साथ है, A2 का साथ है, and A2 किसका साथ है, A3 का साथ है, then A1 A2 का साथ, A2 A3 का साथ होने से then क्या होना पड़ेगा, A1 also related to A3 होना है. If this is happened, yes, if these two happened, if we consider A1 is related to A2 as well as A2 is related to A3, then if these two together implies A1 is related to A3, yes, then we call this relation is nothing, transitive relation. That means this type करके देखो, suppose A1 A2 A3 ले लो. सपोज A1 A2 का साथ है, A2 अगेन A3 का साथ है, देन क्या होना चाहिए, A1 A3 का साथ होना चाहिए सीधा. ठीक है, इफ दिस इज हैपेंड, सपोज वी कंसीडर दिस टू, एंड इफ दिस टू कंडीशन implies A1 relate to A3, then we call this relation is nothing, transitive relation. Yes, you see the definition. If A1 comma A2 belongs to R and A2 comma A3 belongs to R, and if these two implies this one, A1 comma A3 belongs to R, yes, then we call this relation is transitive. Yes guys, okay. So बोलो अप टू दिस वन तक किसी का डाउट है, इसको पूरा लिखना है, बोलो. Do you have any doubt? Do you have any doubt? Do you have any doubt? नहीं है. अच्छा मेरा भाइयों और बहनों, प्लीज लाइक करो एटलीस्ट क्लास को, एटलीस्ट लाइक तो करो, अप्रिशिएट करो ना, थोड़ा खुद को थोड़ा एनर्जी गेन होगा मेरा. एटलीस्ट लाइक करो, इतना सारा बच्चे हैं. Okay guys, okay, so now come to this question. You see,
here you see let capital R be the relation on the set of Z, set of integer के ऊपर एक रिलेशन R हम लोग डिफाइन किया and given by this way. Yes, you see the definition of this relation. देखो कैपिटल R में a कोमा b होगा only when 2 divides a minus b. Yes, a माइनस बी को जब 2 ने डिवाइड करेगा देन a b का साथ रिलेट होगा. नाउ वी नीड टू शो दिस रिलेशन इज नथिंग, दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव. यस, दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव. सो गाइस देखो इसमें असली में क्या दिया है, ये दोनों सेट लिया है जेट, दोनों सेट क्या है जेट, जेट मतलब सेट ऑफ इंटीजर. और सबको शायद मालूम है जेट ऑफ इंटीजर में क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर में 0 -1 -2 -3 ये सब होता है, 1 2 ये सब हो जाता है. या में 0 -1 -2 -3 या में 1 2 3 ये सब होता है. ठीक है बस. नो देखो यहाँ में हम लोगों को R का डेफिनेशन क्या दिया है, जो कोई भी एलिमेंट A B का साथ रिलेट होगा ओनली व्हेन देयर डिफरेंस इज डिविजिबल बाय 2. जब A माइनस B को 2 से डिवाइड करेगा तभी क्या होगा, A B का साथ रिलेट करेगा. ठीक है, व्हेन A माइनस B इज डिविजिबल बाय 2 देन A will relate to B. Yes, or A will relate with B. Then suppose you consider कोई भी एक वैल्यू ले लो, सपोज एक 0 ले लो, बोलो 0 और 0 का साथ रिलेट करेगा. देखो 0 -0 तो 0 -0 कितना होगा, 0 हो जाएगा. एंड which is divisible by 2, 0 -0 इक्वल टू 0 होगा एंड which is divisible by 2, दैट मीन्स 0 0 का साथ होगा. ठीक है, सिमिलरली देखो 0 1 का साथ होगा क्या, देखो 0 -1 इक्वल टू कितना होगा, -1 होगा एंड -1 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, दैट मीन्स ये 0 जो है ये 1 का साथ नहीं होगा. ठीक है, सिमिलरली 0 2 का साथ लेके देखो 0 -2 दैट मीन्स -2 होगा. यस, which will be divisible by 2, that means 0 2 का साथ होगा, सिमिलरली 0 4 का साथ होगा, इस टाइप का होगा ना, 0 -2 का साथ होगा. ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ कनेक्शन विल बी देयर. बस हियर यू सी जस्ट वी नीड टू शो दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव. सो हम लोग ये जो वर्किंग रूल है ना, ये जो डेफिनेशन है, हम जो ये जनरल डेफिनेशन है यही को यूज करके इसको सॉल्व कर देगा. ठीक है, दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करेगा गाइस, मैथमेटिकली ऐसा करके कुछ मतलब ये जो वर्किंग रूल है ना इसको यूज करके हम लोग सॉल्व करेगा. सो देखो हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं. So what we do here guys, just you consider like this way, let A comma B and B comma C belongs to R. Yes, and where A B C belongs to Z. इसको हम लोग ले लिया. देखो इसको हम लोग चूज किया, क्या चूज किया है, A comma B belongs to R एंड हम लोगों ने B कोमा C बिलोंग्स टू, यस गाइस, B कोमा C बिलोंग्स टू R, इसको हम लोग चूज किया. ठीक है, दैट मीन्स यहां से A इज रिलेटेड टू B, यस, एंड B इज रिलेटेड टू C. इसको हम लोग एज्यूम किया है. नाउ वी नीड टू शो दिस A is also related to C. yes, वो हम लोगों को देखना है.
ए कोमा सी आर में है बोल के दिखाना है, ठीक है। तो देखो कैसे करेगा, तो अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन ऑफ दिस रिलेशन, देखो ए बी का साथ रिलेट होता है और ए कोमा बी आर में होता है, जब क्या होगा 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। सो फ्रॉम दिस ऑन, ये जो फास्ट वाला है ना, फास्ट वाला बिलोंग्स टू आर है, तो यहां से हम लोगों को क्या मिलेगा, ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2। यस गाइस, देखो 2 डिवाइड्स ए माइनस बी जो है, और ए माइनस बी डिविजिबल बाई 2 सेम ही चीज है, ठीक है, सेम ही लैंग्वेज है, थोड़ा अलग से करके लिखा है। एंड देखो इसमें b कोमा सी बिलोंग्स टू आर दिया है, यहां से क्या मिलेगा गाइस बोलो, यहां से b माइनस सी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, ठीक है, डिविजिबल बाई 2 होगा। a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2 एंड b माइनस सी ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। नाउ देखो यहां से कोई भी दो चीज 2 से डिवाइड होने से वो दोनों का सम भी क्या होता है, 2 से डिवाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज देखो 4 इज डिविजिबल बाई 2, एज वेल एज सपोज 12 इज डिविजिबल बाई 2, बट देयर सम ऑल्सो विल बी डिविजिबल बाई 2। यस, देखो दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, क्योंकि देखो 12 प्लस 4 कितना होगा 16, एंड दिस 16 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 होता है, ठीक है। तो इसमें देखो a माइनस बी डिविजिबल बाई 2 एज वेल एज b माइनस सी डिविजिबल बाई 2, दैट मीन्स दे आर सम। यस, दैट मीन्स a माइनस बी प्लस b माइनस सी डिविजिबल बाई क्या है, डिविजिबल बाई 2। यस, ये डिविजिबल बाई 2 होगा। अभी देखो इसको प्लस करके देखो, इसको प्लस करने से देखो ये माइनस बी प्लस बी विल बी कैंसिल, सो फ्रॉम हियर ए माइनस सी विल डिविजिबल बाई कितना होगा, 2 होगा। तो अभी देखो गाइस यहाँ में ए माइनस सी डिविजिबल बाई 2 मिला है। सो अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन देखो, जब a माइनस बी को 2 ने डिवाइड करता है, देन a कोमा b का साथ होता है। सिमिलरली देखो a माइनस सी इज हियर डिविजिबल बाई 2, दैट मीन्स 2 डिवाइड्स a माइनस सी, दैट मीन्स फ्रॉम दिस वन वी कैन से a कोमा सी कहाँ रहेगा, r में रहेगा। यस गाइस, a कोमा सी कहाँ रहेगा, r में रहेगा। दैट मीन्स दिस आर इज क्या है, ट्रांजिटिव है, बिकॉज देखो इसमें हम लोग a कोमा बी एंड b कोमा सी ले लिया था, और हम लोग फाइनली यहाँ से क्या मिला है, ये जो a एंड c है ये दोनों भी कहाँ होता है, r में होता है। दैट मीन्स दिस रिलेशन r इज क्या होगा, ट्रांजिटिव। यस, so guys, do you have any doubt here? Do you have any doubt? Do you have any doubt? Joy, Polash, do you have any doubt? बोलो कोई डाउट है इसमें? रानी, एनी डाउट? नहीं है, बस। Now you see another problem. You see this problem. Show that the relation R on capital R, that means on the set of real number. Yes,
the relation capital R on the set of real number defined this way: R equal to A comma B, where A is less or equal to B, is reflexive, transitive, but not symmetric. Yes, you see the definition of relation. A will relate B when A is less or equal to B. जब A less or equal to B होगा, then only A will relate with B. Yes, this relation is reflexive, symmetric, but not transitive. We need to show. Yes, guys, we need to show this relation is reflexive, symmetric, but not transitive. So how we can prove this one? अच्छा गाइस, एक काम करो तो अपना नाम थोड़ा लिखो तो कौन कौन ज्वाइन किया है। एक बार काइंडली एक बार नाम लिखो अपना अपना, इसमें एक बार अपना अपना नाम लिखो। जॉय, रानी, पलाश, ये सब तो है। बाकी लोग कहाँ में कौन कौन ज्वाइन किया है हम एक बार देख लेगा, ठीक है। एक बार अपना नाम लिखो, बी क्विक। और अभिषेक आया है ना, अभिषेक इज हेयर, जस्ट जल्दी करो। जॉय तो हेयर, जल्दी जस्ट अपना नाम लिखो एक बार, कौन कौन ज्वाइन किया है, और प्लीज लाइक करो। ओके गाइस, ओके, सो यू सी दिस क्वेश्चन। सो देखो, ए इसका ए बी का साथ रिलेट होगा ओनली व्हेन ए इज लेस और इक्वल टू बी, and here a relation is on set of real numbers. set of क्या है, reals. that means इसमें जो set होगा ये पूरा का पूरा रियल नंबर होगा, इसमें भी क्या होगा, पूरा का पूरा रियल नंबर होगा। दिस इज आवर रिलेशन, आर फ्रॉम रियल नंबर टू रियल, ठीक है। अभी देखो, इज दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव गाइस? इज दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव? Yes, because you see, it is clear that yes, कोई भी एक नंबर, रियल नंबर, इज ऑलवेज लेस और इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर। कोई भी रियल नंबर ले लो, विच ऑलवेज विल बी लेस और इक्वल टू ए। यस, जैसे मान लो टू ऑलवेज लेस और इक्वल टू क्या होता है, टू हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं। यस, 1 is less or equal to 1. yes, we can write like this way. yes, so कोई भी एक नंबर के लिए ऑलवेज क्या होता है, a is less or equal to a हो जाता है फॉर एनी रियल के लिए, ठीक है। दैट मीन्स फ्रॉम दिस वन व्हाट वी कैन राइट हियर, a comma a will belongs to r, क्योंकि a जब a से लेस और इक्वल टू हो जाता है देन A will relate with A. That means A comma A R में रहेगा। Yes, that means क्या होगा, and this is happen for all A belongs to R. So this R is क्या होगा, reflexive. So for reflexive, yes, this will be the answer. So therefore R is क्या है, reflexive. प्लीज लाइक करो क्लास को, बहुत सारा स्टूडेंट है जिसने लाइक नहीं किया है। देखो, आर रिफ्लेक्सिव हो गया। नाउ वी नीड टू शो दिस रिलेशन इज ऑल्सो ट्रांजिटिव। यस, सो यू सी हियर फॉर ट्रांजिटिव, सपोज वी कंसीडर हियर लेट let A comma B and B comma C belongs to R, and where this A, B, C belongs to the set of real number. Yes,
Now we need to show this A is relate with C. Yes, that means we need to show A comma C belongs to R. So from this on, you see, from this on, A comma B belongs to R, and according to our definition of relation, you see, definition of relation में क्या होना चाहिए? A B का साथ relate होगा only when A is less or equal to B. So from this on, since A is relate with B here, that means from this on A will be less or equal to B, and also you see here B is less or equal to C from this on, because B is related with C here. So from this on we get this condition, A is related with B as well as B is related with C. So from this on, yes, ये दोनों को मिला के this together will imply here A is less or equal to C. Why? You see here, जब A B से छोटा होगा और इक्वल होगा and B क्या होगा, C से छोटा होगा, so definitely क्या होगा, A C से छोटा होगा और इक्वल होगा. Yes, so from these two condition we can write this one. Yes, so now you see here A is less or equal to C, and according to our definition this will imply here A comma C belongs to R. Yes guys, so you see we have considered here A comma B and B comma C, these two are in R, and finally we get here A comma C belongs to R. That means this R is transitive. R is transitive. Yes, so देखो R transitive हो गया. Now for symmetric, you see R is not symmetric. Why this is not symmetric, guys? Yes, why this is not symmetric? Because you see here, suppose we consider A comma B belongs to R. Yes, and where A comma B belongs to set of real number. So from this one what we get, A is less or equal to B. But this will not imply, this is not imply B is also less or equal to A. Yes, this is not always. Not always. Always ये नहीं होगा. जब A B से छोटा और लेस होने से हमेशा B लेस और इक्वल टू C नहीं होगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज मान लो 2 is less or equal to 4. 4 से 2 क्या है, छोटा है. But we can write like this way. Yes, we can write like this way. 4 is less or equal to 2. ये तो नहीं होगा guys. 2 क्या हो सकता है, लेस और इक्वल टू 4 लिख सकते हैं, बट 4 इज लेस और इक्वल टू 2. दिस इज पॉसिबल? नो. दैट मीन्स देखो इसमें बहुत सारा इस टाइप का रियल नंबर रहेगा जो A लेस और इक्वल टू B होने से B लेस और इक्वल टू A नहीं होता है. दैट मीन्स यहां से क्या मिलेगा गाइस, B comma A, this is not belongs to R for all A comma B belongs to R. सबके लिए ऐसा तो नहीं होगा गाइस. जब A comma B लेने से B तो A का साथ हमेशा नहीं होगा. That means this R is not symmetric. Yes, so R is not symmetric. बस. Do you have any doubt guys? बोलो. Do you have any doubt? Devashish, Prem, Sadif, Rinzi, Abhishek, Karma, बोलो. Do you have any doubt? अरे भाई कुछ बोलो. डाउट नहीं है? अच्छा, ओके, डाउट नहीं है ना. देखो ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सब एग्जाम में आता है गाइस. नाउ you come to another type of relation which is equivalence relation.
देखो एक इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, एक रिलेशन व्हिच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव. Yes, if a relation satisfies the three conditions, then we call the relation is nothing equivalence relation. Yes, so ये equivalence relation का definition तो बहुत ही easy है, सीधा बोलो जिसका जो reflexive, symmetric as well as transitive होता है, then the relation is called equivalence relation. Is it okay guys? Okay. So here I will consider an example. Okay. So for example, here let capital L is nothing a set of all straight line, yes, ST lines in a plane. एक प्लेन में जितना स्ट्रेट लाइन है सबको ले लिया, कैपिटल L बना दिया. एंड R इज ए, yes, R is a relation on capital L defined by, this is question, yes, defined by this way, R equal to this one L1 comma L2 such that L1 is parallel to L2 and where this L1 L2 belongs to capital L. Yes, now show that this R is an equivalence relation. Okay, R is an equivalence relation. R is an equivalence relation. Yes, okay. So you see R will be equivalence relation only when R is reflexive, symmetric as well as transitive. Yes, so you try to prove or try to show whether this R is reflexive or not. So first for reflexivity, yes, reflexivity. So you see here any relation is any line, suppose we consider L, this line always will be parallel to itself. Yes, कोई भी एक लाइन L वो खुद का साथ हमेशा क्या होगा, पैरेलल होगा. दैट मीन्स एक खुद का साथ क्या होगा गाइस, इसमें ऑलवेज पैरेलल होगा. दैट मीन्स क्या होगा, कोई भी एक लाइन L का साथ क्या करेगा गाइस, रिलेट करेगा. सो वही चीज को थोड़ा लिखना है, तो ऐसे करके लिखो, सिंस एनी लाइन L is always पैरेलल टू itself. yes, वो खुद का साथ क्या होता है, पैरेलल हो जाता है. पैरेलल हो जाता है मतलब क्या होगा, L is parallel to L. yes, it is L is parallel to L. so since L is parallel to L मतलब here L comma L belongs to R. for all small L belongs to set of lines. ठीक है, ये पूरा का पूरा लाइन के लिए होगा. दैट मीन्स क्या होगा, दिस R is reflexive. yes, R will be reflexive. Okay, so now come for क्या guys, symmetry के लिए. so now come for symmetric. so symmetry के लिए हम लोग क्या करेगा, देखो here we consider let L1 comma L2 belongs to R and where this L1 comma L2 belongs to capital L. yes, now we need to show this L2 comma L1 also belongs to R here. yes, so you see here we consider this L1 comma L2 belongs to R. that means from this from the definition of this relation R, this L1 will be parallel to L2. yes guys, you see ये जो सिंबल है ना, दिस इज पैरेलल के लिए हम लोग यूज करते हैं. ठीक है, इसको हम लैंग्वेज में लिख देता है, नहीं उनसे तुम लोग अगेन कंफ्यूज हो जाओगे. एक मिनट देखो,
So from this one we can write L1 is parallel to L2. Yes. अभी देखो कोई भी एक लाइन सपोज L1 ले लो and this line is L2. Here you see if we consider L1 is parallel to L2, then L2 also will be parallel to L1. Yes. So here if we consider L1 is parallel to L2, then from this on we can write L2 is also parallel to L1. That means this L2 is parallel to L1 मतलब ये L2 L1 का साथ क्या करेगा, relate होगा. Yes guys, so here you see L2 L1 का साथ relate किया है. So देखो L1 को मैं L2 R में लिया था और फाइनली हम लोगों को क्या मिला है, L2 is related to L1. That means R is symmetric. So R is symmetric है. Now come for transitive. ट्रांजिटिव. सो ट्रांजिटिव क्या होगा, ट्रांजिटिव के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, यू कंसीडर हियर L1, L2 ये R में है एंड L2, L3 this is also belongs to R and where these L1, L2, L3 these are belongs to capital L. Yes. Now we need to show this L1, L3 also belongs to R. Yes. Now you see from the first one L1, L2 belongs to R मतलब L1 is parallel. Yes, parallel to L2 and from this one you see L2, L3 is belongs to R here. That means from this on L2 is parallel to L3. So now you see here this L1 line, this is L2 line, so L1 is parallel to L2 and here this L2 suppose parallel to L3, so it is clear that this L3 line also, sorry, L1 line is also parallel to L3. So from these two we can easily write here L1 is parallel to L3. Yes. And since L1 is parallel to L3, that means L1, L3 belongs to R. That means R is क्या है, R is transitive. Yes, R is transitive. So now you see R is here reflexive, symmetric as well as transitive. So R will be an equivalence relation. So hence R is an equivalence relation. Yes, so this is the proof of this question. Yes, so guys this type of questions are important. Okay, so इसको थोड़ा अच्छा से सॉल्व करो. बोलो किसी का कोई डाउट, डू यू हैव एनी डाउट? You have any doubt? Okay. Are you boring? No. Okay. कोई डाउट नहीं है. So come to this question. You see here consider a set capital A. एक सेट दिया है and we construct a relation R where R equal to A comma B and here AB belongs to capital A and here you see modulus of A minus B is divisible by 4 is an equivalence relation. Yes, we need to show this relation R is an equivalence relation. That means we need to show this relation is as well a reflexive, symmetric and transitive. Yes, just you see the definition of relation here first. Yes, and the set A. So first of all you see suppose we consider this is our A set, this is A set and this is our relation R and you see here A सेट में क्या क्या रहेगा, X belongs to Z होगा, X belongs to Z होगा and क्या होगा X 0 and 12 and वो दोनों का बीच में रहेगा. That means
जेट होगा मतलब क्या होगा गाइस, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सब कहाँ रहेगा, ए में रहेगा। यस, सिमिलरली यहाँ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, these are will be in A. yes, A में ये सब रहेगा। एंड यू सी द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, ए बी का साथ रिलेट होगा ओनली व्हेन डिफरेंस का जो मॉडुलस है वो क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए। तो देखो सपोज जीरो का साथ, जीरो किसका किसका साथ कनेक्ट होगा, देखो पहले जस्ट इसका ग्राफिकल किस टाइप का होगा, जीरो किसका साथ डिफरेंस, जीरो का साथ किसको डिफरेंस लेने से 4 से डिविजिबल होगा। तो मान लो सपोज जीरो, जीरो का साथ, यस, 0 माइनस 0 एंड इसका मॉडुलस ले लो, दिस विल बी 0 एंड व्हिच इज डिविजिबल बाय 4, यस, दैट मीन्स 0 0 का साथ रिलेट होगा यहाँ में। अभी 0 1 का साथ देखो तो 0 1 का साथ दिस विल बी 1 एंड व्हिच इज नॉट डिविजिबल बाय 4, दैट मीन्स 0 1 का साथ नहीं होगा। 0 किसका साथ होगा गाइस, 4 का साथ होगा, तुम लोग खुद ई करके देखो। 0 8 का साथ होगा, 0 12 का साथ होगा, ठीक है। सिमिलरली 1 किसका साथ होगा, 1 का साथ होगा, 1 5 का साथ होगा, 1 9 का साथ होगा, ठीक है। इस टाइप करके रिलेशन होगा, ठीक है। नाउ वी नीड टू शो दिस रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव। बस हम लोग क्या, सॉरी ये रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। दैट मीन्स जस्ट हियर विल यूज द basic working rule for reflexive, symmetric and transitive. Okay, so now you see for reflexive, so reflexive के लिए देखो क्या चाहिए, कोई भी एक नंबर ले लो, यस, लेट ए बिलोंग्स टू दिस कैपिटल है, इसमें कोई भी नंबर, दैट मीन्स इसमें ए क्या हो सकते हैं, स्मॉल है 0 1 2 अप टू 12 में कोई भी एक इंटीजर नंबर होगा। इसके लिए क्या होगा, देखो a माइनस ए, इसका वैल्यू कितना होगा गाइस, यू सी फॉर एनी a बिलोंग्स टू कैपिटल ए, व्हाट विल बी दिस वन, मॉडुलस ऑफ a माइनस ए, दिस विल बी मॉड ऑफ 0 एंड दैट मीन्स दिस इज 0 एंड व्हिच इज डिविजिबल बाय, यस, व्हिच इज डिविजिबल बाय 4, यस, कोई भी नंबर ले लो, अभी a1 ले लो, a2 ले लो, कोई भी ले लो, a2 माइनस a2 ऑलवेज 0 होगा, a3 माइनस a3 ऑलवेज 0 होगा। सो कोई भी नंबर ले लो, खुद का साथ इसका डिफरेंस लेने से हमेशा 0 होगा एंड व्हिच विल बी डिविजिबल बाय 4, यस, दैट मीन्स फ्रॉम दिस वन वी कैन राइट a बिलोंग्स टू r, सीधा फॉर ऑल a बिलोंग्स टू कैपिटल A। देखो इसमें भी हम देखा है, देखो 0 0 का साथ लिया था, इसमें 1 1 का साथ भी कनेक्ट किया था, 2 2 का साथ भी करेगा, जितना है खुद का साथ हमेशा कनेक्ट होगा। दैट मीन्स दिस रिलेशन R इज क्या है, रिफ्लेक्सिव, यस, सो R इज रिफ्लेक्सिव, सो R विल बी रिफ्लेक्सिव। नाउ कम फॉर सिमेट्रिक। So in case of symmetric, what we do here guys, just you consider let a comma b belongs to R and where this a b कहाँ है, कैपिटल A सेट में है, yes, we consider this one। now from this one what will be the value of this one according to our definition of relation, this will be divisible, दिस विल डिविजिबल बाई 4, ये 4 से डिवाइड होगा क्योंकि आवर डेफिनेशन ऑफ रिलेशन ऐसे दिया है, ठीक है। ठीक है गाइस, देखो सो नाउ फ्रॉम दिस वन व्हाट वी कैन राइट हियर, b माइनस ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 4 होगा क्योंकि b को आगे लिखो, a को पीछे लिखो, एक ही होगा, b माइनस ए ऑल्सो विल बी डिविजिबल बाई 4। सो फ्रॉम दिस ऑन b कोमा a बिलोंग्स टू क्या होगा, r होगा एंड दिस इज हैपन फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू कैपिटल A। सो r क्या होगा, r सिमेट्रिक होगा,
आई होप ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। ये बहुत ही इजी था। अभी ट्रांजिटिव के लिए देखो, ट्रांजिटिव के लिए थोड़ा सा अलग से हम लोगों को करना है। ट्रांजिटिव, सो ट्रांजिटिव के लिए देखो क्या होगा, हियर वी कंसीडर a comma b belongs to r and b comma c belongs to r, yes, and where a b c कहाँ है, कैपिटल A में है, yes. So we consider this one, then from this one what we get here, the modulus of a minus b is divisible by 4, and क्या होगा, b minus c is also divisible by 4 होगा, yes. a minus b divisible by 4 होगा and b minus c also divisible by 4. Now you see guys, from here कोई भी नंबर देखो जब a minus b इसका मॉडुलस डिविजिबल बाय 4 होने से सिंपली a माइनस बी डिविजिबल बाय 4 होगा। देखो फॉर एग्जांपल सपोज मान लो 2 माइनस ऑफ 6, इसका मॉडुलस कितना है, 4 है, यस। 2 minus 6 मतलब minus of 4, yes, modulus of minus 4, and this is 4, and this 4 is divisible by 4. And also you see here 2 minus 6, 2 minus 6 मतलब minus और 4, this is also divisible by 4. That means कोई भी नंबर मॉडुलस डिविजिबल बाय 4 होने से वो नंबर भी खुद भी क्या हो जाता है, डिविजिबल बाय 4 हो जाता है, ठीक है। सो यहां से देखो, from this on, since modulus of a minus b is divisible by 4 means we can write like this, है ना, a minus b is divisible by 4, and from this on we can write b minus c is divisible by 4. And you see here these two are divisible by 4 means their sum also will divisible by 4. This is also, yes, divisible by 4. So from this on what we get here, a minus c is divisible by 4, क्योंकि ये b कैंसिल होके क्या होगा, a minus c रहेगा। So here you see a minus c is divisible by 4 मतलब इसका मॉडुलस भी divisible by 4 होगा। a minus c is modulus of a minus c also divisible by 4 होगा। So from this on what we can write guys, a comma c belongs to r. So r is क्या है, ट्रांजिटिव। सो R is an क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन, यस। R will be an equivalence relation because this R is reflexive, symmetric as well as transitive. Guys बोलो, कोई डाउट है? Do you have any doubt? यस जोना, क्वेश्चन को एक बार दिखा दो, क्वेश्चन को, ओके। देखो दिस इज आवर क्वेश्चन ना, देखो जोना दिस इज द क्वेश्चन, यही क्वेश्चन था, देखो दिस इज आवर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था, देखो कैपिटल ए एक सेट दिया था, सेट में क्या है, x बिलोंग्स टू z एंड वेयर 0 लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू 12, एंड हियर डिफाइन ए रिलेशन r विच कंसिस्ट a कोमा b, जहाँ में a भी a में रहेगा एंड द मॉडुलस ऑफ a माइनस b इज डिविजिबल बाय 4, ये कंडीशन क्या है। दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन चाहिए, ठीक है गाइस। बोलो किसी का कोई डाउट, एनीवन हैव डाउट, डू यू हैव एनी डाउट? नहीं है डाउट,
देखो एक क्वेश्चन में और एक पार्ट दिया है, क्या दिया है देखो, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन, वन का साथ रिलेट होने वाला जितना नंबर है सबको चाहिए। ठीक है, तो देखो हम इसमें ऑलरेडी देखो इसको ड्रॉ भी किया था। वन फर्स्ट ऑफ ऑल किसका साथ कनेक्ट होता है, वन का साथ होगा। वन किसका साथ होता है गाइस, फाइव का साथ होता है, क्योंकि फाइव एंड वन का देखो वन एंड फाइव का जो डिफरेंस है दिस इज डिविजिबल बाय क्या हो जाता है गाइस, फोर होता है। तो वन फाइव का साथ होगा, और किसका साथ होगा देख बोलो, वन नाइन का साथ होगा, क्योंकि देयर डिफरेंस कितना होगा देखो, वन माइनस नाइन, दिस विल बी 8, सो दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय क्या है, डिविजिबल बाय 4 है। तो और देखो वन किसी का साथ होता है क्या, नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, एक नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4। सो ये तीन ही नंबर है 1, 5 एंड 9, दिस थ्री नंबर वी रिलेटेड टू 1। ठीक है, तो अभी ये जो सेट ऑफ ये है ना, सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच आर रिलेटेड टू 1, इस सेकेंड पार्ट के लिए, यस ये सेकेंड जो पार्ट है ना, ये सेकेंड पार्ट का तुम्हारा आंसर क्या होगा, दिस विल बी दिस वन, यस इसमें क्या रहेगा 1, 5 एंड 9 रहेगा बस। यस गाइस बोलो, किसी का कोई डाउट। सौरभ, सौरभ आ गया, अच्छा। जॉय, प्रेमा, देवाशीष, do you have any doubt? Are you worrying? Okay, just wait. Within 15 minutes I will go. Finished. 10 or 15? Yes. Do you have any doubts, sir? क्वेश्चन को एक बार लिखा करो, बोलो कोई डाउट है? नहीं है, ओके। सो नाउ कम टू दिस क्वेश्चन। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो क्या दिया है, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट दिस वन। एक सेट दिया है जिसका अंदर में कितना है 1 2 3 4, ये एक सेट देखो, इसमें हम इसमें ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, एक सेट है 1 2 3 4, 1 2 3 4, यस इसमें एक रिलेशन हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया। एंड कैसे कंस्ट्रक्ट किया देखो, आर में 1, 2 होगा, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 1, 3, 3, 3, 3, 2। देखो 1, 2 होगा मतलब 1 2 का साथ रिलेट होगा, 2, 2 होगा मतलब 2 2 का साथ रिलेट होगा, 1, 1 होगा मतलब 1 1 का साथ भी रिलेट होगा, 4, 4 देखो 4 4 का साथ रिलेट होगा, 1, 3 होगा, 3, 3 होगा, एंड 3, 3 होगा। यस दिस इज आवर रिलेशन। नाउ यू हैव टू चूज which option is correct. Yes, you see there are 4 options is given. From this on, just you need to choose the correct option. So you see, first of all, you see all the options have here reflexive, symmetric and transitive. Yes, so first you check whether this relation is reflexive or not. Is this relation is reflexive guys? Abhilash bolo, is this relation is reflexive? Is this relation is reflexive? Bolo. Is this relation is reflexive? Chaurav, Devashish, Sadeep bolo, is this relation is transitive? देखो फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, देखो रिफ्लेक्सिव होने के लिए कोई भी एलिमेंट खुद का साथ ऑलवेज क्या होना चाहिए, रिलेट होना चाहिए। जैसे देखो 1 1 का साथ है, यस 2 भी देखो 2 का साथ है, 3 3 का साथ है, 4 4 का साथ है। देखो इसमें ये जो है 1 1 का साथ है, 4 4 का साथ है, 3 3 का साथ है, 2 2 का साथ है। दैट मीन्स कोई भी एलिमेंट खुद का साथ ही हमें रिलेट कर रहा है। सो इसमें क्या होगा, रिफ्लेक्सिव तो होगा।
दिस इज रिफ्लेक्सिव फर्स्ट थिंग। नाउ कम फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए, जब 1 2 का साथ होगा 2 1 का साथ भी होना चाहिए। जैसे देखो इसमें 1 2 का साथ, देखो 1 2 का साथ है, देखो इसमें ग्राफ में देखो 1 2 का साथ है, पर देखो 2 1 का साथ नहीं है। देखो इसमें 2 1 का साथ नहीं है क्या, नहीं है गाइस। देखो 1 2 का साथ है बट 2 1 का साथ नहीं है, दैट मीन्स दिस इज नॉट सिमेट्रिक। ये तो सिमेट्रिक नहीं होगा, सो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। अभी ट्रांजिटिव के लिए देखो गाइस, इज दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव, इज दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव गाइस, इज दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। देखो ट्रांजिटिव होने के लिए जैसे देखो 1 2 का साथ है 2 2 का साथ है, तो 1 2 का साथ है 2 2 का साथ है, तो 1 2 भी है। कोई भी इस टाइप करके देखो, जैसे मान लो 1 3 का साथ है 3 3 का साथ है, तो 1 3 का साथ भी है, यस। जैसे देखो 3 2 का साथ है, 2 अगेन 2 का साथ है, तो 3 2 का साथ है, दैट मीन्स दिस रिलेशन ऑल्सो विल बी ट्रांजिटिव। सो ये क्या होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, ट्रांजिटिव होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, बट नॉट सिमेट्रिक। सो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, देखो रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। सो दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। सो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होगा, बट क्या नहीं होगा गाइस, क्या नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। तो देखो इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन हम दे दिया है। शायद सर जी इतना से हो जाएगा शायद ना आज के लिए, यू आर लेट ना, यस। सो गाइस देखो और कुछ इस टाइप का यहाँ में देखो कुछ फंक्शंस दिया है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है, तो ये सब को हम ग्रुप में भेज देगा, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन इस टाइप का है, 5-6 क्वेश्चन है, एंड दीज आर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन हम तुम लोगों को ग्रुप में भेज देगा, ये सब को तुम लोग खुद से प्रैक्टिस करो, ठीक है। दीज आर योर असाइनमेंट, ओके। इसको तुम लोग खुद से प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करके ग्रुप में इसका आंसर देना है, ठीक है गाइस। तो गाइस बोलो आज के क्लास में किसी का कोई डाउट होने से बोलो, आई थिंक दिस इज एनफ, मोर देन एनफ। और क्लास कैसा लगा है बोलो, अच्छा लगा है तो थोड़ा कमेंट वगैरह करो इसमें, ठीक है। लाइक कमेंट वगैरह करो थोड़ा, ठीक है। कोई डाउट होने से बोलो, और एटलीस्ट क्लास में कोई कमेंट वगैरह दे दो कैसा लगा है, ठीक है। आज का क्लास कैसा था बोलो। सो अभिलाष, सौरभ आर देयर, बोलो आर यू हियर मी गाइस। बोलो किसी का कोई डाउट होने से बोलो, नहीं होने से अभी ख़त्म कर देगा हम क्लास, यस नो डाउट, ओके। तो हम ये सब असाइनमेंट को तुम लोगों को सेंड करेगा, ठीक है। तुम लोग खुद प्रैक्टिस करके ग्रुप में सेंड करो, ठीक है। और यू में सेंड पर्सनली ऑल्सो, यस। मेरा पर्सनल नंबर में सेंड कर सकते हो व्हाट्सएप नंबर में, और नहीं होने से ग्रुप में डालो, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है गाइस। बोलो किसी का कोई डाउट होने से बोलो, नहीं होने से पर्सनल नंबर में डालो, हाँ मेरा पर्सनल व्हाट्सएप में डालो, क्योंकि ग्रुप में डालने से तो सब लोग वही को कॉपी पेस्ट करके दे देगा, ठीक है। सो प्लीज़ क्लास को एक बार लाइक करो और एक बार कमेंट करके लेफ्ट मारो, ठीक है। एक बार क्लास को लाइक करो, कमेंट मारो एंड लेफ्ट मारो। ओके, सो बाय बाय गाइस, गुड नाइट, अच्छा से बैठो। सौरभ अच्छा से खाना खाओ, अच्छा से डिनर करो सब लोग, बाय बाय।
Good night. Good night. Good night, guys. Okay, bye bye.